Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. Former Jammu and Kashmir Chief Minister and head of People's Democratic Party, Mehbooba Mufti, today held her first press conference since her release from a 14-month-long detention. She was also booked under the controversial Public Safety Act after the Modi government abrogated Article 370 last year in August. In today's press conference, a flag of the party was placed along with the flag of the erstwhile state of Jammu and Kashmir, setting the tone for what would be an aggressive presser. Mehbooba Mufti attacked the Bharatiya Janata Party, accusing it for violating, in fact shredding the Constitution of India when it abrogated Article 370. She also said that the Kashmir issue was much bigger than Article 370, a fact that the Bharatiya Janata Party does not comprehend. Mehbooba Mufti also took on the Bharatiya Janata government on its policies in the Indo-China standoff. She said that China had taken large portions of Indian territory, and this is a fact which is well known according to her. जहाँ तक चाइना का सवाल है, वो एक हकीकत है कि उन्होंने 1000 स्क्वायर किलोमीटर वो हमारा अभी तक हड़प कर चुके हैं, उस पर कब्जा कर चुके हैं। 1000 स्क्वायर किलोमीटर, मेरे ख्याल में कोई 40 किलोमीटर बड़ी मुश्किल से मिन्नतें करके इन्होंने वापस लिए, अभी शायद 960 किलोमीटर उनके पास है। ये भी एक हकीकत है कि चाइना ने खुद 370 की बात करते हैं, वो कहते हैं कि ये डिस्प्यूटेड है, तो आपने इसको क्यों यूनिलैटरल किया। तो ये तो एक हकीकत है कि चाइना जो अभी हमारे बॉर्डर्स पे है, वहाँ से उत्तराखंड दूसरी जगह से भी आ रहा है, ये तो यू कैन डिनाई इट, इट्स अ फैक्ट। इट्स अ फैक्ट कि 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर इससे पहले इतना इंटरनेशनल व्यू में कभी नहीं आया जितना इसके बाद आया। While talking about her future in the electoral politics, she said that as long as the Jammu and Kashmir is not given back its flag and its constitution, which means the special status, she will not be part of electoral politics. Mehbooba Mufti also was grilled over her statements which she had issued right before her detention last year, when she had said that if the special status of Jammu and Kashmir is taken away, there will be no flag bearers, there will be no one to hold or uphold the Indian flag in Jammu and Kashmir. She was grilled over her statements, and she clearly said that till the time the special status, or in her words, she said till the time the flag and the constitution is not returned, she will not hold any other flag. मेरा एजेंडा तो ये है, सामने मैंने रखा है। जिस वक्त हमारा ये झंडा वापस आएगा, हम उस झंडे को भी उठा लेंगे, मगर जब तक हमारा अपना झंडा डाकुओं ने डाके में ले लिया है, तब तक हम किसी और झंडे को हाथ में नहीं उठाएंगे। और वो झंडा हमारे आईन का हिस्सा है। जब इन्होंने खुद ही उस आईन की धज्जियां उड़ाई, उस झंडे की धज्जियां उस दिन उड़ाई जब जम्मू में रेप हुआ, और उस झंडे को लेके ये उन रेप के जो रेपिस्ट थे उनके हक में नारे देने लगे। इन्होंने तो खुद ही डेसिक्रेट किया कॉन्स्टिट्यूशन को भी, इन चीज़ों को भी। तो ये हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? व्हाट डू दे एक्सपेक्ट फ्रॉम अस? हमारा झंडा तो ये है, और हमारा उस झंडे के रिश्ता इस झंडे ने बनाया है। इट इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ दिस फ्लैग, जो हमारा इस मुल्क के झंडे के साथ रिश्ता है। जिस वक्त हमारे हाथ में ये झंडा आएगा, हम वो झंडा भी उठा लेंगे। Towards the end of her presser, Mehbooba Mufti also made an appeal to the people of Jammu and Kashmir and said that she needed their support. She also said that for a long time, the people of Jammu and Kashmir, particularly the youth, have given up their life, and it was time for leaders to pay with their blood. That is when she made this appeal to the people to support her. What remains to be seen is whether her constituents or the people of Jammu and Kashmir in general will respond to her political overtures. Azan Javed for The Print in Srinagar.